глядела, мои глазушки глядят. Я бы рада не глядела, мои глазушки глядят, мои глазушки глядят. Girls were looking for their husbands on Tuesday during Maslenitsa week. So, are you looking for a husband? I'm on a hunt. Oh, nice! Type of a holiday. It's basically that we celebrate the end of winter and the beginning of spring, and as well it's more of a religious thing, because starting from Monday it will be a fasting when people fast 48 days before their Easter time. So this weekend is the last day just to feast, to eat, to have fun, to drink, to celebrate like spring, new life. And starting from Monday, just to keep it quiet. So everybody, we're gonna get like super crazy and wasted today, I guess. Maslenitsa, or Pancakes holiday. It is national Slavic holiday, symbolizing seeing off of winter and meeting of spring. Мои глазушки глядят, полюбить тебя хотят, полюбила девчоночка московская. That we celebrate Maslenitsa for whole week. Yes, guys, and each day has its meaning. So now I am going to tell you interesting meaning of each day. So Monday, guest day. According to ancient belief, whoever remains in the house will bury his household. Tuesday, fun day. Guys were looking for brides and girls for their husbands. Wednesday, delicious day. Housewives cook different tasty dishes. Mothers-in-law treated sons-in-law with pancakes. Thursday, also fun day. Families gathered together, built snow castles, stage horse races. Friday, mother-in-law evening. Sons-in-law treated mothers-in-law, and then sons-in-law had to ride mothers-in-law through the streets of village or city. A really funny tradition. Saturday, sister-in-law day. Wives treated with pancakes husbands' sisters, entertained them and gave some presents. And finally Sunday. I think the most important day. It's Forgiveness Day. People ask forgiveness from loved ones for their insults. Я бы рада не глядела, мои глазушки глядят. Я бы рада не глядела, мои глазушки глядят, мои глазушки глядят. Здравствуйте, हेलो आदाब नमस्कार। यह है मसलेनित्सा फेस्टिवल। कुछ अपने होली की तरह ही होता है, लेकिन मैं अक्सर जो रशियंस हैं उनसे कहता हूं कि भाई थोड़ा सा बेरंग है, क्योंकि आप रंगों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो हम सोच रहे हैं कि अब नेक्स्ट ईयर जो मसलेनित्सा होगा तो हम रंगों का इस्तेमाल भी करेंगे। 14 मार्च को यानी संडे को लास्ट डे था, तो सबसे अपने यार दोस्तों से रिश्तेदारों से सबसे माफ़ी भी मांग ली है। तो फिर सोचा कि भाई आपके साथ में इसकी जो मसलेनित्सा में जो एक डिश बनाई जाती है ब्लिनी, उसकी रेसिपी शेयर करते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है, ब्लिनी सिर्फ एक मसलेनित्सा फेस्टिवल फूड नहीं है। ये यहाँ पर ब्रेकफास्ट में बहुत खाया जाता है, और जैसे अपने मैकडोनल्ड्स वगैरह होते हैं वैसे यहाँ पर बड़े बड़े कैफ़ेज़ हैं जो सिर्फ ब्लिनी ही सर्व करते हैं। इसमें अंडे का इस्तेमाल होगा, लेकिन जो प्योर वेजिटेरियन है वो अंडे को हटा सकते हैं। उसकी जगह पर आप 1 चम्मच चिया सीड्स या फिर 1 चम्मच फ्लैक्स सीड्स, उनको 3-4 चम्मच पानी में भिगो करके रख दीजिए। फिर उसका पेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर 1 चम्मच कॉर्न स्टार्च, और उसके बाद इसे आप अपने किसी भी फेवरेट जैम के साथ में एंजॉय कीजिए। लेकिन अगर आपके कोई गेस्ट हैं, अगर आप अपने किसी गेस्ट को सर्व करना चाहते हैं, तो एपिसोड के बीच में हम वो भी देख लेंगे कि कैसे आप बेहतर तरीके से अपने गेस्ट आपके जो हैं उन्हें सर्व कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं ब्लिनी। If you haven't subscribed to our channel yet, make sure to subscribe and hit the bell icon so that you get instant notifications of our new video upload.
very hot.
ब्लिनी आपकी रेडी है, खाइए, एंजॉय कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपसे कभी कोई गलती हुई है, आपने कभी किसी का दिल दुखाया है, आपको किसी से माफ़ी मांगनी चाहिए, तो किसी ख़ास दिन का इंतज़ार मत कीजिए, आज ही मांग लीजिए। और अगर कोई आपसे माफ़ी मांगता है तो उसे माफ़ करने के लिए भी किसी ख़ास वक्त का इंतज़ार मत कीजिए, आज ही कर दीजिए, क्योंकि ज़िंदगी बस उतनी ही है जितनी हम जी चुके हैं। आने वाला कल तो एक सपना है। तो खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, थोड़ी सी खुशी हमें भी दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। 10 विदानियाँ।